In this video, I am going to discuss about the next topic, time velocity graph. And time velocity graph means if we measure the velocity of a moving object at a different time, and finally we'll draw a graph between time and velocity, then that graph is called time velocity graph. And with the help of this time velocity graph, we can determine the several things, like with the help of the time velocity graph we can determine the displacement of the body at any particular time. Second, here we can measure the acceleration of the body. Also we can measure here, if suppose two object is moving and their time velocity graph is given together on the same graph paper, then also we can find here whose acceleration is more or less. So in this way we will get the several idea about the from the time velocity graph. Let velocity time graph of two object A and B is given, and both graph A and B is parallel to time axis. And if the velocity time graph is parallel to time axis, it means your velocity is remain constant. For both object A and B, velocity is constant. And their magnitude, this one is 4, and this magnitude, if we will consider, this one is also 4 meter per second. It means the magnitude of both object A and B is 4 meter per second. But if one is plus other is minus, means both are moving in opposite direction. Here plus 4 minus 4 means both objects are moving in opposite direction but with the same velocity, constant velocity. And with the help of this velocity time graph, suppose if you want to measure or if you want to determine the displacement in any interval of time, किसी इंटरवल ऑफ टाइम में आप इस ऑब्जेक्ट का या इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं कितना होगा, तो क्या करिए, सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम 2 to 5 सेकेंड, 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. तो क्या करिए, दो 2 to 5 सेकेंड, तो 2 सेकेंड देखिए कहां है, इससे आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे परपेंडिकुलर खींचिए और इस 5 से यहां पे खींचिए. सपोज इट कट द ग्राफ, दिस वन इज सपोज हियर p, और दिस वन इज suppose I am taking here, this one is p q, and suppose it cut here r, and this one is s. suppose हमको क्या निकालना है कि 2 to 5 सेकेंड के बीच में इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. हमने क्या कहा, 2 से 5 सेकेंड के बीच में, 2 सेकेंड से उस ग्राफ पे परपेंडिकुलर डालिए, किस पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, और 5 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. जहां ये कट कर दे, that velocity time graph in that region where it cut under time axis, ये टाइम एक्सिस जिसके बीच में हमको निकालना कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये देखिए इसको कहां कट किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ को. तो इस पूरे ग्राफ की मतलब यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर टाइम एक्सिस for that interval of time. It means displacement of the object in time interval in time interval 2 to 5 second is equal to एरिया ऑफ, इसकी एरिया निकालेंगे, देखिए 2 से 5 सेकंड के बीच में ये और ये इसकी पूरी एरिया, तो एरिया ऑफ पी ए पी क्यू आर एस, ये पूरी एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस सिंपली. And that displacement S is equal to, how can you find the area of this one? You know, area of this rectangle, as you know, length into breadth. You can see this one 5 minus 2, or this one is how much here,
Simply you can say PQ into PS. How much is PQ? PQ is here 4. And what is PS? P to S. P to S means 5 minus 2. And this will be 4 into is equal to 12 meter. It means if the velocity time graph and object is given like this one, then with the help of this velocity time graph in time interval 2 to 5 seconds, the displacement of that object is how much here? 12 meter. So simply you can say with the help of the velocity time graph, you can find the displacement of the object in any interval of time by calculating the area of velocity time graph under time axis for that interval of time here. And you can calculate the displacement of the object with the help of velocity time graph for any shape of the graph. It not necessarily always the shape of the graph is like this one. Suppose if the shape is like this here, then also we can calculate the displacement of the object in any interval of time. For this example, suppose velocity time graph is given like this, and this one is a straight line. And in this case, you want to find out the displacement of the object in time interval t1 to t2. Suppose on x-axis we have taken the time and on y-axis the velocity of the object. तो जैसा मैंने बताया है, जिस टाइम इंटरवल के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, उस टाइम से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा किसके ऊपर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिया है उसके ऊपर. If you want to find out the displacement in time interval t1 to t2, तो पहले t1 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, and suppose it cut the velocity time graph at point A. Again we will drop the perpendicular from t2 on velocity time graph, and suppose when we drop the perpendicular on it, then it cut the velocity time graph at point B. अब आप देखिए इस टाइम इंटरवल और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कौन सा पोर्शन ये कवर किया है. तो कौन सा पोर्शन कवर किया है? इतना पोर्शन ये कवर किया है, ये इतना. इस टाइम इंटरवल में इस ग्राफ का इतना पोर्शन कवर हो गया इसके साथ. तो वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t1 to t2 by calculating the area of this A, B, B dash, A dash. So you can say here the displacement of the object in time interval t1 to t2. Suppose S is equal to, how can we find area of, किसकी एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर that time interval or that time axis. So you can say area of A, B, B dash, A dash. And how can you find the area of this A, B, B dash, A dash? Simply you can say, you can divide it here. Suppose this one is perpendicular drawn from the T1 and T2 on this velocity time graph, and you can divide it. Suppose this one is. So total area of this A, B, B dash, A dash is equal to area of triangle ABC plus area of this rectangle. You can say AC, B dash, A dash is equal to area of triangle ABC plus area of rectangle. You can say AC, B dash, A dash. And I hope maybe all of you know how can we find the area of any triangle and how can we find the area of any rectangle. By taking these two areas, you add it, then you will find out the area of A, B, B dash, A dash,
and that area will give what here? Displacement of that object in time interval t1 to t2 here. So in this way, with the help of velocity time graph, you can calculate the displacement of the object in any interval of time. Second one, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम द टाइम वेलोसिटी ग्राफ। पहला हमने बताया कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अब बता रहे हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द एक्सीलरेशन विद द हेल्प ऑफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ। सिंपली द स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप क्या बताता था? वेलोसिटी। एंड ऑलरेडी आई हैव डिस्कस हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप। इन सेम वे टाइम वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? एक्सीलरेशन। जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है एंड दिस वन इज ए टाइम वेलोसिटी ग्राफ लाइन, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप का कल मैंने तरीका बताया था if suppose angle is given, so slope is tan theta. But if the straight line is given here and you have taken time on x-axis and velocity on y-axis and you want to find out the slope of this graph line, so you will take any 2 point on it. Suppose I am taking 2 point, one point is A, another point is B, and now drop the perpendicular from these 2 points on time axis. Suppose when we drop the perpendicular from this point A on time axis, it cut the time axis at T1. And when we drop the perpendicular from B on time axis, it cut the time axis at T2. A B आप कोई दो पॉइंट आप ले लीजिए इस ग्राफ लाइन पे। Similarly, you drop the perpendicular from A on velocity axis. Suppose it cut the velocity axis at V1, and in same way when we drop the perpendicular from B on the velocity axis, suppose it cut the velocity at V2. Now you extend this line, इसी को आप बढ़ा दीजिए, this one is C, and now slope of this line, slope is equal to, how can we find the slope? Slope means if suppose this angle is theta, so this angle will also theta, and slope is tan theta, and from triangle ABC, when you will calculate tan theta, so tan theta means perpendicular BC upon base AC. So simply you can say slope is equal to BC upon AC. Or simply you can say slope is equal to tan theta is equal to BC upon AC. Always remember the slope is tan theta. And BC, what is BC? So you can find BC is V2 minus V1. So you can write here BC is V2 minus V1 upon AC. AC is T2 minus T1. And this V2 minus V1 you can write delta V upon T2 minus T1 is delta T. And the slope of time velocity graph is called what here? Acceleration. So this acceleration A you can calculate delta V upon delta T. So in this way we can find the acceleration by calculating the slope of velocity time graph line. मैं पहले ही बताया था in the previous video कि by taking the slope of time displacement graph का slope लेंगे तो क्या बताएगा? Velocity. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो क्या बताएगा? एक्सीलरेशन. सपोज इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज गिवन टुगेदर ऑन द सेम ग्राफ, अगर सेम ग्राफ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो ऑब्जेक्ट का दिया गया है, एंड सपोज दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज गिवन टुगेदर, और मैंने बताया है कि दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सीलरेशन. So out of these two, greater the slope, greater will be the acceleration. So out of these two objects A and B whose time velocity graph is given, so since the slope of B मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस से? थीटा 2, और A कितना बना रहा है? थीटा 1.
तो थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू tan थीटा 2 ज्यादा होगी tan थीटा 1 से। इसका मतलब स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही क्या बताता है? एक्सेलरेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ B is greater than acceleration of A. So greater will be the slope of velocity time graph, greater will be the acceleration of the object. Next point, if the velocity time graph is parallel to time axis, याद रखिएगा हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। लेकिन यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट मींस द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ये इससे कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो tan 0 की वैल्यू 0, इसका मतलब इसका स्लोप कितना होगा? 0 डिग्री। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही क्या बताता है? एक्सेलरेशन। इट मींस इन दिस केस इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन the acceleration of the body is 0। और बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या तो बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां बॉडी रेस्ट में नहीं है बल्कि बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो रिमेंबर दिस, इफ velocity time graph of an object is parallel to time axis then its slope will be 0। slope 0 means its acceleration will be 0। एंड एक्सेलरेशन 0 होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज होती है, क्या क्या? या तो बॉडी रेस्ट में हो या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। लेकिन यहाँ पे बॉडी रेस्ट में नहीं है बल्कि यहाँ पे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इन दिस वे यू कैन से इट मींस द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity। Next point, if the time velocity graph line makes an angle greater than 90 degree with the time axis, अगर एक time velocity graph line time axis से angle बना रहा है greater than 90 degree, it means in this case the slope of this line becomes negative, and negative slope means its acceleration becomes negative। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। इट मींस रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। तो याद रखिएगा वहां हमने जगह बताया था नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता था बॉडी इज रिटर्निंग टुवर्ड द रेफरेंस पॉइंट। और यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि इफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ लाइन मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री then the slope of this line becomes negative। it means the acceleration is negative and negative acceleration means retardation is taking place। And next point, if the time velocity graph of an object is curved then it means that the acceleration of the object is continuously changing। अगर velocity time velocity graph एक कर्व है, जैसे ये कर्व दिया है, इसका मतलब इस कर्व के हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज होगा, और अगर स्लोप चेंज होगा तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज होगा। इट मींस इफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज ए कर्व देन its slope or you can say its acceleration is continuously changing, and with the help of this one we can determine the average acceleration or instantaneous acceleration in a given interval of time। जैसे हम टाइम t1 से टाइम t2 के बीच में निकालना चाहते हैं इस ग्राफ से कि व्हाट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे? t1 और t2 के corresponding इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। सपोज इट कट द कर्व एट पॉइंट p and q, join this line PQ and calculate the slope of this line PQ, and the slope of this line PQ will give the average acceleration in time interval T1 and T2। Then you can say average acceleration in time interval T1 to T2, that one you can write here A bar। Bar means average acceleration। And how can we calculate the slope of this line PQ? जैसा हमने बताया था, slope means perpendicular upon base, so you can write here this is equal to
v2 minus v1 upon t2 minus t1. And v2 minus v1 you can write delta v upon delta t. And in this way you will get the average acceleration of the object in time interval t1 to t2. And how can we find the instantaneous acceleration? So with this time delta t is very small, जब ये time delta t बहुत small हो जाएगा तो यही delta v upon delta t क्या बताएगा? Instantaneous acceleration. So you can write the instantaneous acceleration is equal to limit delta t tends to 0 delta v upon delta t, और इसको हम लिख सकते हैं dv upon dt. मैंने बताया जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा टेंस टू जीरो, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या बता देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट विल बी आल्सो गिवन एज dv upon dt. Now here 2 point is very important for this continuous curve. First one, if the time velocity graph is bending upward, suppose this one is a continuous curve but bending upward, then the acceleration is continuously increasing. इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का टाइम वेलोसिटी ग्राफ कॉन्टिन्यूसली कर्व है जो अपवर्ड की तरफ बेंड कर रहा है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. एंड if the time velocity graph is bending downward, then acceleration is continuously decreasing. जैसे ये है velocity, time velocity graph is bending downward, इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम वेलोसिटी ग्राफ खींचा गया है उस ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. So dear student, today you go through all these graph which I have discussed about this time velocity graph, and next video I will give you the acceleration time graph.